Hello everyone. So in this video, we will be doing the next topic of our digestive system unit. It will be pancreatic secretion. So we will be covering half of it in this video and half of it in the next video, as it is a long one. So pancreatic secretion, we will be starting in this video. So it is a very important chapter also. So please remember it. Okay. So pancreatic secretion is by the exocrine part of the pancreas. Okay, so pancreas have two parts. We all know that pancreas is a dual organ. So it means it has both functions. It has the exocrine function as well as the endocrine function. So the exocrine part of the pancreas is what is involved in the pancreatic secretion in our digestive system. Okay, the endocrine part we will study in the endocrine chapter, in the hormones chapter, right? तो अभी हमें एक्सोक्राइन पार्ट पढ़ना है. So let's first talk about the structure of the pancreas. So जो pancreas का structure है, it is similar to that of salivary gland. Okay, so like what is the structure of salivary gland? It has acini. So that, like that only, the pancreas is also made up of acini, which are also known as alveoli. Okay. Now the acinar cells, that the cells or the acinar cells, they contain zymogen granules, and these zymogen granules possess I wrote it again. So they possess zymogen granules. Okay, so acinar cells contain these zymogen granules. Mhm. Yeah. Now, let's talk about the duct system. Now, it is very important to know the duct system ऑफ द पैनक्रियास. तो इसे ध्यान से देखना. सबसे पहले एक स्मॉल डक्ट जो होती है, इट अराइजेस फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ ईच alveolus. ओके, देन सम डक्ट्स टुगेदर दे फॉर्म इंट्रालोब्युलर डक्ट. पहले एक हर एक लॉबुलस से जो है एक स्मॉल डक्ट अराइज होती है. हर एक alveolus से एक स्मॉल डक्ट अराइज होती है. कुछ नेबरिंग डक्ट्स साथ में मिलके जो है एक कॉमन डक्ट बना लेती हैं, which is known as the intralobular duct. So this is the intralobular duct. ठीक है. नाउ दिस इंट्रालोब्युलर डक्ट जो होती है, ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलके it joins with the main pancreatic duct, or which is known as the Wirsing duct. ओके, तो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ ये इंट्रालोब्युलर डक्ट और ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट या विर्सिंग डक्ट मिल जाती है. ठीक है, ये दोनों मिल जाती हैं. एंड ये जो है पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं हम इसको. जो टोटल ये बनेगा आगे, इट इज पैनक्रियाटिक डक्ट. ये पैनक्रियाटिक डक्ट जो है कॉमन बाइल डक्ट के साथ जुड़ जाती है और एम्पुला ऑफ वेटर बनाती है. ठीक है, एम्पुला ऑफ वेटर बनाती है और एम्पुला ऑफ वेटर डुओडेनम में ओपन होता है. और कुछ लोगों में एक्सेसरी डक्ट भी प्रेजेंट होता है, विच इज द डक्ट ऑफ सैंटिरेनी, और वो डुओडेनम में ही ओपन होता है, वो भी प्रॉक्सिमल टू द एम्पुला ऑफ वेटर. तो इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना. जो आपकी असाइनर सेल्स हैं, उनमें से जो है छोटे छोटे डक्ट्स जो होते हैं, दे अराइज, दैट आर नोन एज इंट्रालोब्युलर डक्ट्स. ओके, द इंटरलोब्युलर डक्ट्स जो होती है, दे यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म इंटरलोब्युलर डक्ट्स. फिर ये इंटरलोब्युलर डक्ट जो होती है, it just combines with the your main pancreatic duct. ओके, ये जो आपकी इंटरलोब्युलर डक्ट होती है, यहाँ पे नहीं लिखा, बट इंटरलोब्युलर डक्ट जो होती है वो ये आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, विर्सन. ठीक है, इसके साथ कंबाइन होती है, राइट. फिर उसके बाद जो है वो जाती है एम्पुला ऑफ वेटर. एम्पुला ऑफ वेटर कैसे बनता है? वो जो है कॉमन बाइल डक्ट के साथ, ये कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, या आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट, विर्सन डक्ट आ रही है, ये कंबाइन जहां हो जाते हैं वहां पे बन जाता है एम्पुला ऑफ वेटर. ये एम्पुला ऑफ वेटर जो होता है, ये ओपन करता है इन द डुओडेनम. कुछ लोगों में ये वाली डक्ट भी प्रेजेंट होती है, विच इज द एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, विच इज द डक्ट ऑफ सैंटोरिनी. ठीक है, सो यू जस्ट remember the names and the sequence. Okay, so for the sequence, learn this flow chart. और अगर flow chart से नहीं समझ आ रहा, so I have written it also here. ठीक है, तो ये पढ़ लो, तो ये सीक्वेंसेस में समझ आ जाएगा. इंट्रालोब्युलर डक्ट, देन इंटरलोब्युलर डक्ट, फिर उसके बाद जो है वो मतलब इंटरलोब, हर एक एल्वियोलस से एक एक डक्ट आएगी, मिलके इंटरलोब्युलर डक्ट बनाएगी. इंटरलोब्युलर डक्ट मेन पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ जाएगी, जिसको हम विर्सन डक्ट भी बोलते हैं. फिर वो पैनक्रियाटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट के साथ जुड़ जाएगी, जिससे एम्पुला ऑफ वेटर बनेगा. कुछ लोगों में जो होता है डक्ट ऑफ सैंटोरिनी भी प्रेजेंट होता है, जो एम्पुला ऑफ वेटर के प्रॉक्सिमली ओपन होता है डुओडेनम में. ओके,
Now talking about the nerve supply, हमारे जो pancreas होते हैं, they are supplied by both sympathetic and parasympathetic fibers. Sympathetic में splanchnic nerve and parasympathetic में vagus nerve, like always. Now properties of pancreatic juice. तो हमारा pancreatic juice कितना होता है per day secrete 500 to 800 ml pancreatic juice secrete होता है, and it is highly alkaline, which is different from the gastric juice we studied last, right? So it is alkaline. Okay, so remember that the pancreatic juice is alkaline, unlike the gastric juice, which is acidic. Okay, remember it like that. Remember it like a statement. Okay, तो हमारा पैनक्रियाटिक जूस जो होता है इट इज हाईली अल्कलाइन और उसकी पीएच कितनी होती है 8 to 8.3 अप्रॉक्सिमेटली। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 से 1.018 के बीच में होती है। नाउ द कॉम्पोजिशन हमेशा 99.5% आपका वाटर है, 0.5% सॉलिड्स। नाउ लेट्स सी इन द चार्ट। हमारा पैनक्रियाटिक जूस है 99.5% इज वाटर, 0.5% इज सॉलिड्स। आपका जो 0.5% सॉलिड है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। ऑर्गेनिक में भी इंजाइम्स और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इंजाइम्स में you have three different categories जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. So they are proteolytic enzymes, that means protein digesting enzymes. Then you have lipolytic enzymes, then you have amylolytic enzymes. Okay, lipolytic is lipid digesting and amylolytic is carbohydrate digesting. So proteolytic enzymes में trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidases, nucleases, elastase and collagenase. Then lipolytic के अंदर आपके आते हैं pancreatic lipase, cholesterol ester hydrolase, phospholipase A, phospholipase B, colipase, bile salt activated lipase. Then amylolytic में आते हैं pancreatic amylase. Okay? फिर उसके बाद है आपके अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट. नाउ फॉर दिस आई टोल्ड यू अ ट्रिक और लाइक अ थिंग टू रिमेंबर दैट आप जो है कुछ बेसिक मिनरल्स याद कर लो, इसमें से एलिमेंट्स याद कर लो सो दैट इट बिकम्स इजी. हर एक में होते हैं जो मैं दोबारा बता रही हूँ, मैंने गैस्ट्रिक वाली वीडियो में भी बताया था कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट इसमें मस्ट है. बाइकार्बोनेट सबसे पहले लिखोगे, ठीक है. बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं, राइट. सो रिमेंबर 4-5 ऑफ देम और सब में यूनिक यूनिक उनका याद कर लो. जैसे पैनक्रियाटिक में यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू मेंशन बाइकार्बोनेट. ओके, राइट इट एट द टॉप in inorganic because you can see bicarbonate content is 110 to 150, like 110 to 150 milli equivalent per liter, right? So it is huge, it is high as compared to other gastric secretion, other secretions in your digestive system. So you have to remember bicarbonate. Okay? Now, here is the reason that why bicarbonate is high. So I mentioned it separately. Bicarbonate content is very high in pancreatic juice, 110 to 150, right? In plasma level of 24, like you can say 24 is plasma, then 110 to 150 is your bicarbonate, which is very big, okay? So it is because of two reasons. First, it makes pancreatic juice highly alkaline, so it protects the intestinal mucosa from the acid time. Second, it provides the required pH. Required pH is 7 to 9 for activation of the pancreatic enzymes. So two reasons क्या हुए. एक तो पहला रीजन ये हो गया कि intestinal mucosa को acidic time से protect करती है, right? Acidic times ताकि intestinal mucosa खराब ना हो, destroy ना हो, उसको protect करती है. दूसरा, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं उन्हें अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है एक्टिवेशन के लिए. जैसे गैस्ट्रिक एंजाइम्स, जैसे आपका पेप्सिन था, पेप्सिनोजेन था, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए था. वैसे ही आपके इंटेस्टाइन ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं उन सबको अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है फॉर एक्टिवेशन. ओके, सो इट इज नेसेसरी. Now let us come to the functions of pancreatic juice. So first is the digestive function, which is the most important. It is the only function most importantly we have to study. Okay. So digestive function में first is the digestion of proteins. Digestion of proteins will be done by proteolytic enzymes, as we know. So digestion of proteins के लिए what enzymes are involved? Trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, nuclease, elastase, collagenase. So you have to remember it. Okay, you have to remember all of them. ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन तो साथ साथ हो जाते हैं. ट्रिप्सिन वो याद होगा तो काइमोट्रिप्सिन याद हो जाएगा. ओके, देन यू हैव टू रिमेंबर कार्बोक्सीपेप्टिडेज. ओके, इट इज डिफरेंट बट
you can remember, I think peptidase आ रहा है, so you can remember carboxypeptidase. Then nuclease, DNA, RNA, elastase, elastin, collagenase, collagen. So remember it like that. Okay. So trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, then nuclease, elastase, collagenase. So let's study them one by one. First is trypsin. तो ट्रिप्सिन क्या होता है? ट्रिप्सिन सिंगल पॉलीपेप्टाइड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 25,000 होता है. सो यू कैन सी दैट इट इज ओनली वन पॉलीपेप्टाइड जिसका खुद का अकेले का वेट इज 25,000. ओके. इसमें जो है 229 अमीनो एसिड्स होती हैं एक पॉलीपेप्टाइड में. ये ट्रिप्सिनोजेन की तरह सीक्रेट होता है. ट्रिप्सिन यानी कि प्रो एंजाइम की तरह सीक्रेट होता है विच इज इनएक्टिव. ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? एंटेरोकाइनेज. नाउ यू विल स्टडी एंटेरोकाइनेज. आई विल टीच यू इन द forthcoming videos when we will like learn about the small intestine secretions. Okay, so enterokinase जो होता है, it is released by brush bordered cells of duodenal mucous membrane. So it is your intestinal juice, part of your intestinal juice. Okay, so enterokinase enzyme जो होता है वो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है. You have to remember this. Then once formed, autoactivation is there by trypsin. Now what does this mean? Okay, autoactivation by trypsin is मतलब मान लो एक ट्रिप्सिनोजेन था. आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली सेइंग दिस. ओके, एक ट्रिप्सिनोजेन मॉलिक्यूल है, उसको एंटेरोकाइनेज ने जो है ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया एक ट्रिप्सिन मॉलिक्यूल में. Now this trypsin doesn't need enterokinase anymore. ये ट्रिप्सिन ही खुद ही वापस जाके ट्रिप्सिनोजेन को जो है फिर से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगी. So that is auto activation. Okay, I will just write it for you if you want. Right, one second. See, if this is, oh my god, one second. Yeah, if this is trypsinogen, okay, one trypsinogen molecule, and enterokinase converted it to one trypsin molecule, right? So now the enterokinase is not required anymore. This one trypsin molecule will like do auto activation. वो बाकी के trypsinogen molecules को खुद ही ये trypsin activate कर देगी. So trypsin will again then convert the trypsinogen molecules to trypsin molecules. Okay, तो एक बार trypsin फॉर्म हो जाता है तो trypsin खुद ही trypsinogen को trypsin में convert करने लग जाता है. So that is auto activation, which is a very important feature of trypsin. So they ask you sometimes in MCQs just to make it a little tricky that which enzyme has the property of auto activation. So you have to write trypsin. You have to remember trypsin. Okay. Now there is a trypsin inhibitor also, which is secreted by pancreas. Okay. So, if trypsin is activated in pancreas, it may hydrolyze the pancreatic tissue proteins, resulting in pancreatic damage. Therefore, it is prevented by trypsin inhibitor. So, actually, हमारा trypsin pancreas secrete करते हैं, right? But आपको पता है that pancreas की सारी secretion small intestine में जा रही है. You can see from the duct system. आपका duct खुल किस में रहा है? दोनों duct. आपका जो एम्पल ऑफ वेटर है और इवन सैंटोरेनी डक्ट है, ये खुल किस में रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, डुओडेनम में. तो आपकी सिक्रीशन डुओडेनम में ही जा रही है. तो सारे एंजाइम्स एक्टिवेट होके डुओडेनम में जा रहे हैं. दे आर सिक्रीटेड इन डुओडेनम. बट अगर मान लो आपका ट्रिप्सिन जो है, राइट, आपका ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया बाय चांस पैनक्रियाज में. वैसे तो उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होना चाहिए क्योंकि एंटेरोकाइनेज स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट है. बट स्टिल अगर वो एक्टिवेटेड हो गया पैनक्रियाज में तो उसकी वजह से जो है पैनक्रियाटिक टिश्यू हाइड्रोलाइज हो जाएगा. बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो वो हाइड्रोलाइज कर देगा पैनक्रियाटिक टिश्यू प्रोटीन्स को, राइट. तो इस वजह से पैनक्रियाटिक डैमेज होगा. इसीलिए हमारे पैनक्रियाज दे ऑल्सो सिक्रीट अ ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ताकि ये जो ट्रिप्सिन है वो एक्टिवेट हो अगर तो वो इनहिबिट हो जाए बाय द ट्रिप्सिन इनहिबिटर इन द पैनक्रियाज. ओके, so trypsin inhibitor is there in the pancreas, not in your small intestine. Okay, now the actions of trypsin. पहले तो protein digestion. So it is the most powerful proteolytic enzyme. Okay, yeah. And it is an endopeptidase. Now what is endopeptidase, what is exopeptidase? तो इसको यहाँ एक बार देख लो. If this is your protein, okay, this is your protein. Let's suppose I'm saying that this is your protein.
So endopeptidase will cleave it from here. Okay, will cleave it from, like, this is one amino acid, this is other amino acid A or B. Okay, these are amino acids. So these two amino acids are joined by a peptide bond, and I am saying that this is your protein. Okay, a very simple structure I have drawn. So if an enzyme cleaves it from the middle, right? Cleaves it means it breaks it from the middle. Then it is your endopeptidase. Okay, like it is cleaving the bond from the middle, from inside, from between the two amino acids. So it is your endopeptidase, right? Now, if your enzyme breaks it from the corners, right? Okay, like this is the whole bond and it is cleaving it from the corners here or here from the ends, then it is exopeptidase. Then it is what? Then it is exopeptidase. ओके, सो एंडोपेप्टिडेज का मतलब बीच में से क्लीव करना, दो एमिनो एसिड के बॉन्ड्स के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको बीच में से क्लीव करना. अगर आप उसे एंड से क्लीव कर रहे हो बाहर की तरफ से, देन इट इज एक्सोपेप्टिडेज. ओके, so your trypsin is an endopeptidase. That means it breaks the interior bonds of the protein molecules and it converts the proteins into proteoses and polypeptides. Okay. The next is your curdling of milk. जो मिल्क में कैसिनोजेन प्रेजेंट होता है उसको कैसीन में कन्वर्ट करता है. सो इट कॉजेस कर्डलिंग ऑफ मिल्क. कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब दूध का फटना, हमारे स्टमक में जाके दूध फटता है. सो इट बिकम्स लाइक अ कर्डलिंग ऑफ मिल्क. तो कैसिनोजेन जो होता है मिल्क का उसे कैसीन में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए हो जाता है. थर्ड इज ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस ये एक्सेलरेट करता है. फोर्थ इज इट एक्टिवेट्स अदर एंजाइम्स. ओके, जैसे आपका पेप्सिन जो है स्टमक में कुछ अदर एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा था, लाइक दैट आपका ट्रिप्सिन जो है वो कुछ और एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है. जो बाकी के एंजाइम्स हैं आपके एक्चुअली पैनक्रियाटिक, उनको ये जो है एक्टिवेट करेगा. ठीक है, तो जैसे काइमोट्रिप्सिन में, जिनको काइमोट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोएलास्टेज को एलास्टेज, प्रोकोलाइपेज कोलाइपेज. ओके, then your fifth is this autocatalytic action, which I just explained. Okay, so trypsin is important. Okay, you have to remember these basic features. Then it is activated by enterokinase is important one. Autoactivation is important one. Trypsin inhibitor you should know. Then actions of trypsin, these 5 actions are important, very important. Okay. नेक्स्ट इज काइमोट्रिप्सिन. काइमोट्रिप्सिन भी पॉलीपेप्टाइड होता है. इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है आपकी ट्रिप्सिन से ज्यादा है, 25,700 है. इसमें 246 अमीनो एसिड्स हैं. काइमोट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन एक्टिवेट करके काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है. इसका एक्शन भी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है. ये भी एंडोपेप्टिडेज है. प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है. वो प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता था. ठीक है, नेक्स्ट है इसका भी डाइजेशन ऑफ मिल्क. ये जो है डाइजेशन ऑफ मिल्क में ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है. डाइजेस्ट द कैसिनोजेन ऑफ मिल्क फास्टर देन ट्रिप्सिन एंड इट हैज नो एक्शन ऑन ब्लड क्लॉटिंग. नेक्स्ट इज कार्बोक्सीपेप्टिडेज. इसके दो वेरिएंट्स होते हैं, कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए, कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी. तो एक्शन, एक तो सबसे पहली बात कार्बोक्सीपेप्टिडेज अब एक्सोपेप्टिडेज है. आपके ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो थे दे वर एंडोपेप्टिडेज. कार्बोक्सीपेप्टिडेज इज एक्सोपेप्टिडेज, यानी ब्रेक्स द टर्मिनल बॉन्ड ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, और ये क्या करता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, जो पॉलीपेप्टाइड्स बनाए हैं आपके काइमोट्रिप्सिन ने, उन पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा. अब जो आपका कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए है वो पॉलीपेप्टाइड्स को एरोमेटिक या एलिफैटिक साइड चेन्स वाली अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा. एंड जो आपका कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी है वो पॉलीपेप्टाइड्स को बेसिक साइड चेन्स वाले अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा. सो रिमेंबर दैट टाइप ए है तो एरोमेटिक या एलिफैटिक साइड चेन्स, टाइप बी है तो बेसिक साइड चेन्स. नेक्स्ट इज न्यूक्लियेजेस. तो राइबोन्यूक्लियेजेस और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेजेस जो होते हैं, ठीक है, उनको डीएनए और आरएनए को मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करते हैं न्यूक्लियसेस. देन इलास्टेजेस जो है, प्रो इलास्टेज को ट्रिप्सिन इलास्टेज में कन्वर्ट करता है. सबसे पहले तो इट इज एक्टिवेशन ऑफ प्रो इलास्टेज इनटू इलास्टेज. देन इलास्टेज जो होता है वो इलास्टिक फाइबर्स को डाइजेस्ट करता है. यू कैन जस्ट गेस इट फ्रॉम द नेम. देन कोलाजिनेज इनएक्टिव प्रो कोलाजिनेज जो होता है उसको ट्रिप्सिन कोलाजिनेज में कन्वर्ट करता है एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कोलाजिन. तो आपके प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स हो गए, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो गया. नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ लिपिड्स. डाइजेशन ऑफ लिपिड्स में है पैनक्रियाटिक लाइपेज. पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है. ओके,
रिमेंबर दीज थिंग्स, किसको किस में कन्वर्ट करता है? तो पैनक्रियाटिक लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए उसको पीएच कितनी चाहिए? 7 to 9। नाउ इट रिक्वायर्स टू मोर फैक्टर्स टू डू सो। Okay, to do this process, it requires two more things. First is bile salts. So, in the presence of bile, it is accelerated. This process is accelerated. So, pancreatic lipase requires bile salts, the presence of bile salts also. Second is colipase. We will study it later. Okay, in this just few moments later. Okay, so colipase is also required for the function of pancreatic lipase. And very important, it digests 80% of the total fat. So 80% of fat is digested by pancreatic lipase. So it has a very strong action. Okay. Next is cholesterol ester hydrolase. So cholesterol ester hydrolase जो है वो cholesterol esters को free cholesterol और fatty acids में convert करता है. Then phospholipase A जो होता है, it is also activated by trypsin. वो लेसिथिन और सिफेलिन को जो है लाइजोलेसिथिन और लाइजोसिफेलिन रिस्पेक्टिवली कन्वर्ट करता है. नाउ दीज लाइसोलेसिथिन एंड लाइजोसिफेलिन, these both are actually clubbed and called lysophospholipid. I mean they are together collectively known as a group lysophospholipids. Okay, because these are your phospholipids, right? So these the converted thing is called lysophospholipids. Okay. Now these lecithin and cephalin are converted into lysolecithin and lysocephalin by phospholipase A. These are collectively known as lysophospholipids. Now these lysophospholipids are converted by phospholipase B into phosphorylcholine plus free fatty acids. Okay, so just remember it as a chain that phospholipids, example lecithin, cephalin, are converted into lysophospholipids by phospholipase A. Then these lysophospholipids are converted into phosphorylcholine plus free fatty acids by phospholipase B. Okay. Next is colipase. Colipase small coenzyme होता है. प्रोकोलाइपेज को सबसे पहले ट्रिप्सिन कोलाइपेज में कन्वर्ट करता है और कोलाइपेज का यही काम है कि वो लाइपेज का फंक्शन जो है वो फैसिलिटेट करे. तो अभी हमने लाइपेज में सपोर्टिंग फैक्टर्स पढ़े थे. पैनक्रियाटिक लाइपेज में बाइल सॉल्ट्स एंड कोलाइपेज. तो कोलाइपेज का काम ही ये है कि वो कोलाइपेज का फंक्शन फैसिलिटेट कर रहा है. इट इज अ स्मॉल कोएंजाइम. देन लास्ट ऑफ योर लाइपोलिटिक एंजाइम्स इज बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज. बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज को हम कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज भी बोलते हैं. ओके, जस्ट रिमेंबर दैट. ओके, तो आपके लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी हो गए. नेक्स्ट इज योर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए पैनक्रियाटिक एमाइलेज, only the carbohydrate digesting pancreatic enzyme is pancreatic amylase, जो कि स्टार्च को एसिडिक मीडियम में डेक्स्ट्रिन और maltose में कन्वर्ट करती है, नॉट इन योर alkaline medium. Okay, so it does not act in your, like it has a very, like you can say it has a very minimal action because your pH is alkaline, right? So इसीलिए इसका एक्शन बहुत कम रहता है. So it स्टार्च को एसिडिक मीडियम में डेक्स्ट्रिन और maltose में कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो डाइजेस्टिव फंक्शन में याद रखना दैट बेसिकली आपके पैंक्रियाटिक जूस का काम जो होता है ना, वो प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है और लिपिड्स का डाइजेशन होता है. ठीक है, तो ये प्रोटीन्स और लिपिड्स के एंजाइम से याद रखना. एंड इन योर कार्बोहाइड्रेट यू ओनली हैव पैनक्रियाटिक अमाइलेज. नाउ नेक्स्ट दिस वाज द डाइजेस्टिव फंक्शन एंड योर नेक्स्ट फंक्शन इज न्यूट्रलाइजिंग एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस. क्योंकि अभी हमने देखा गैस्ट्रिक जूस जो आता है दैट इज एसिडिक, राइट? तो ये जो होता है अल्कलाइन होता है. तो एसिडिक के साथ अल्कलाइन मिल जाएगा, सो इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ चाइन. Okay, so the your chyme becomes neutral as it goes into the small intestine. So this is the table. Okay, I just added it ताकि आप जब revise करो revision के time पे it becomes easy for you. Otherwise I have discussed everything in detail. But exams से just पहले आप revise कर रहे हो, सुबह revise कर रहे हो, right? So just look at this table, so it will be easier for you. At least you will know the activator and the substrate and end product, right? So till here, these are proteolytic, then these are your lipolytic, and this is carbohydrate digesting. Okay, so you should like
right, classify like this and just see that the trypsin are activated by enterokinase and then by trypsin autoactivation. Then all the other enzymes or proteolytic are activated by trypsin. Then in lipolytic, your lipase and cholesterol ester hydrolase are activated by the alkaline medium itself. But बाकी enzymes जो है आपके phospholipase A, B, colipase और bile salt activated lipase, they are activated by trypsin. But your pancreatic amylase does not need an activator. Okay, it does not need an activator. It means acidic medium, obviously. Okay, then it acts on, you have to remember, and then the end products. Just remember this that trypsin जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स में नहीं कन्वर्ट करता, वो प्रोटियोजेस एंड पॉलीपेप्टाइड्स दोनों में कन्वर्ट करता है. Okay, so just remember that proteosis word. Okay, it is important. Okay, so that's it for this video. आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं पैनक्रियास के बारे में, दैट द व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द पैनक्रियाटिक सिक्रीशन एंड देन व्हाट इज द रेगुलेशन ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रीशन and some pancreatic and exocrine function tests also we will look at some of them, and then applied physiology, that is the disorders of pancreas. ये topics हम next part 2 में cover करते हैं. Okay, so that's it for the video. Thank you so much for watching. Please do like, subscribe, and share with your friends. And please just tell your batchmates. Okay. Thank you so much. Bye.